Good evening, all of you. Welcome, you guys. Hey guys, welcome to Unacademy, India's largest online platform. So great news to all of you. We are starting this accelerate batch, that is join the Brahmastra batch. In this batch, you can get the top educators will take those classes, and it is like a fast track course. We'll try to finish this class complete subject with the very fastly we can do. So you can join this course by using the code of BV Reddy. To enroll for it now here, you can use the code of BV Reddy to avail the great discounts. The great discounts are available. You can avail it. In this course, the top educators will take the classes, and do join this course. The new batch is starting from the 13th October onwards. And another great thing is you can avail the flat 50% discount. You can able to avail it. Try to this opportunity before it going to expire. Try to utilize this one. The top educators will take the classes. You can see, and you can enroll for this as a great discounts are waiting for you, and the new subject is starting. This is from 13th October onwards. The Amandra sir is taking the aptitude. To enroll for it, use the code of BV Reddy. BV Reddy. In this course, I will try to cover these topics, whichever the topics you feel the difficulty. You can comment in the comment sessions. I will discuss. Comment in the comment session. I will discuss each and everything in detailed manner. ठीक है? हुआ तो जल्दी जल्दी मेरे से डिस्कस करो. If you want to comment anything, if you want any subject and all, so then that we are going to discuss it. The top educators will take in the classes. You can enroll for these batches, right? Fine. Yeah, जरूर. So I will discuss this with Chandan. I will discuss the पूरा ट्रांजिशन हम डिस्कस करेगा इसके पहले. So you can, so पहले स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेगा इसके बैच विल डू. This batch is completely free. The YouTube class, this batch is completely free. It is completely free. And so here these are the plus features, and if you want come to the plus features, you can come to the plus by using the code of BB Reddy. And this courses I am starting the networks today. I am starting, and the networks and digital I will take. All the subjects will be completed. So here these classes will be run both in YouTube and special classes. It will be run both in both YouTube and special classes. And do enroll for this thing as soon as possible. Now I will take the subjects networks and digital I will take in this course. Now you can have all the scholarship test, and do follow me my profile. You can check my profile. You can check my profile. In the profile you can follow and enroll for it. Now you will get the all the benefits. You will get class PDF you can get in my community में आपको मिलेगा. ये पूरा फ्री है. यस, ये पूरा जो क्लास हमने करा ये पूरा फ्री क्लास है. यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लास मीन्स फ्री क्लासेस ओनली. नो नीड टू कम टू द प्लस. सो आ गया. सो हियर प्लस में आए तो हियर आउट ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिलेगा. To enroll for it now, you can use the scholarship test. You can use this thing. Be ready to enroll for it. And now we are going to start this as a first lecture. That is a networks. I'm starting. So let's start our discussions, all of you. Let's talk about this thing here, all of you. The network theory. And about this network theory, I'm doing the subject both in YouTube में होगा as well as special classes में होगा. YouTube plus special classes. All these classes are free. YouTube as well as special classes, and all these are free of cost. All these are the free of cost. You can watch it now.
If you want to learn from the basics, then you have to, so this course is not suitable. So here in this course, this is like a fast track course, and in this course we'll cover the maximum important things, briefly we'll cover, and then problems will discuss. In this course I will focus mostly on the problems में हम focus करें ज़्यादा से ज़्यादा. So जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है जैसा ट्रांसिएंट्स, एसी सर्क्यूट्स, वो टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेगा. सो फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स, ये सभी को पता है अच्छा से, इसीलिए हमने इसको बेस इसका प्रॉब्लम्स में हम फोकस करेगा. तो ये सब्जेक्ट दिस इज हेल्पफुल फॉर दिस ऑल, ईसी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यूजफुल होगा. द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी, दोनों के लिए यूजफुल होगा. यस. सो अगर कोई डाउट हुआ तो बोलो जल्दी फटाफट, कोई डाउट हुआ तो बोलो, यू कैन डिस्कस विथ मी. सबसे पहले सो हियर हम डिस्कस करेगा ए नेटवर्क क्या चीज़ है, सर्क्यूट क्या चीज़ है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सर्क्यूट का डिफरेंस क्या है. टेल मी नाउ. नेटवर्क, circuit is what we can say here, circuit and network which is what, tell me, interconnections. ये क्या होता है here? Interconnection, interconnection of electrical elements, interconnection of electrical elements. It may or may not. To have at least one closed path, at least one closed path होना पड़ेगा इसमें, तभी ये सर्किट बोलेगा. you should have at least path होना पड़ेगा. Next, circuit means what, tell me now. OB, interconnection only. Interconnection of electrical elements. It may or may not. This is what we can say here. From this we can call this as every circuit is called as a network, but every network may not be a circuit. So here circuit के लिए एटलीस्ट वन क्लोज्ड पाथ होना पड़ेगा. नेटवर्क के लिए क्लोज्ड पाथ का जरूरत भी नहीं है. ठीक है. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले द बेसिक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेगा. दैट इज अ रेसिस्टर. Resistor, what is the resistor? You tell me now here. Resistor, how we can define is a, the property of a material which opposes just the flow of current. Flow of current is called as resistance. Resistance, the one, so here resistance is a one that is a which opposes the flow of current is called as a resistance. A resistor is a device which opposes. Now if we have considered this is my resistor, it will opposes the flow of current.
current I. Now this is a resistor. For this resistor is a dissipative element. The current is entering here. Wherever the current will enter, so the terminal is a positive, leaving terminal is negative. Okay. Then if I say the voltage across this resistor, if I say VR, which is, tell me, R into I. The current is entering here, the terminal is a positive, leaving terminal is what, tell me, negative for resistor. Resistor is a passive element, which is a dissipative elements. Right. Now if we have considered some, this is my some conductor. So if we have taken, this is a conductor, I have taken the 2 points I have taken inside this conductor. There is a flow of current through conductor is I, and the potential difference between them is V. For the special classes, what we can do here, you do follow me my profile in Unacademy में. So whenever I start, I will do this special class. आपको notification in my community you can follow. I will share the links. I will share the links in the community. You can do watch in this. In these sessions here, in this now, I will try to cover the maximum topics, and but I will try to cover the all the last 15 years of PYQs. I will cover it. Last 15 years of PYQs I will focus. I will focus mostly in the session now here. प्रॉब्लम डिस्कशन में हम फोकस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, राइट. This one, this is the opposition is called as a resistance. In general, the resistance of any material, या नोट्स भी कम्युनिटी में आपको मिलेगा, नोट्स भी कम्युनिटी में आपको मिलेगा. R which is given as rho L by A. Resistance is given as what, tell me, rho L by A. And this is also given as, we can write it as L by sigma A. We can also write this as what, tell me, L by sigma A, where rho is a resistivity and sigma is a conductivity. Where rho is called as what, tell me, resistivity. Resistivity. And sigma is called as a conductivity. And the resistivity rho, which is given as what, tell me, 1 by sigma, which is given as 1 by sigma. Right. And coming to this is power. Power across a resistor, which is given as power equal to V into I. And energy, and this power, which we can also write it as what we can say here, I square into R, that is also equal to V square by R. Integration of the power P into dt. So this energy, which we can say this as V, this which we can also write it as, tell me now here, I square R into dt. This we can also write it as, tell me, integral of V squared by R into dt. Right. Next, if we see the VI characteristics, characteristics. VI characteristics.
And what the VA characteristics now here? If I draw this as a voltage versus current, if I draw this thing here, I have taken this as I, we have taken x y axis, voltage along y axis, the characteristics which could be given as what, tell me? It is a straight line passing through the origin is a whole characteristics. From these characteristics we can say the given element. The element is what we can say now here, resistor. Resistor is what nature we can say? Resistor. We can say this as what, tell me now? Linear, passive, passive, bilateral. Resistor. Linear, passive, bilateral ऐसा होगा. And if we talk about this as a the interconnection of resistors, what we can say, tell me? If the resistors we have the seriously we have connected, अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो then equivalent क्या बोलेगा, tell me? R1, R2, R3. So then equivalent resistance which is given as what, tell me? R1 plus R2 plus R3 है. इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इस and this is R1, R this is R3. Then the equivalent resistance 1 by R equivalent, which is equal to 1 by R1 plus 1 by R plus 1 by R3. If we have only two resistors are there, if I have only two resistors are there, in that the equivalent for only two resistors are there, in that case equivalent resistance, which I can call this as R equivalent, which is given as what to tell me here, R1 R2 by R1 plus R2. This formula is valid only for two resistor case. VDR means what, tell me? Voltage division rule. VD. Have the resistors has been connected in series, either has been connected in series, then in these situations same kind will flow here, same kind will flow here. This voltage which I am calling it as a V1, this voltage I am calling it as a V2, this voltage is a V3, and for this we apply the supply. Let us call the supply is something Vs. Then we can write the voltage division rule. We can say here voltage is directly proportional to its resistance. So tell me now what I can write now here. V1, we are the resistors R1 R2 here. Tell me now V1, which is given as voltage across this resistor, that is R1 by R plus R2 plus R into Vs. Next V2 is equal to, that is R2 by, I need this across this resistor, R1 R2 plus R3 into Vs, and so V3 which is given as
R3 by R1 plus R3 into Vs. This is the voltage division, and we can see CDR means, tell me, current division rule. Hope all of you are able to follow. This is थोड़ा fast track course ना, थोड़ा speed में होगा. So try to utilize this thing. The resistors has been connected in parallel. Able to follow ना? कोई problem है क्या? बोलिए. Am I going? Able to follow? Now here we are calling this is supply. This supply which I am calling this current, we are calling it as something IS. This resistor is R1, this is R2, this is R3. Right. Now this current I am calling it as I1, this current is I2, and this current is I3, current division. So this how this current proportional here is proportional to 1 by R, which is inversely proportional to the resistance. So अगर मुझे I1 चाहिए तो current to the first given as what I can say here 1 by R1 by R1 by what we can say this is. Now this is 1 by R1 plus 1 by R2 plus by R3 into IS over supply current. Next 2 I2 बोलिए into IS. Next I3 equal to by R2 into IS. कैपेसिटर वीडियो में चेंज होगा. यस, चेंज होगा. वो भी डिस्कस करेगा जब भी कैपेसिटर आया. डन. ऐसा हम करेगा. चलो हम शुरू करेगा हमारा प्रॉब्लम्स. नाउ टेक दिस थिंग हियर. A 12 volts battery is connected to 36 watt light bulb for 1 hour. Then asking to find the current passing through the bulb. So tell me now here. I need to find here. So power is given. The power that is a rated power now. The power across the device which is given as what? Tell me. Rated power is V square by R. How much this value given as a 36. Now V value given now, so from this we can get this R value. How much now? By 36. So how much will get, you tell me? So here V is now here 3/4. This value 4 ohms here. This is a resistance we got. Now we can get the current now here. We know this is current I.
which is nothing but what I can say here, 12 by 4, which it has a 3 amps. They ask us to find energy dissipated. Energy which is given as what we can say, integration of a power. This is, since the power is a constant, which is the 12, we can multiply directly now here. 12 into dt. How much the time is 1 hour. 1 hour converted to seconds. 60 minutes into 60 seconds. This many joules. This is the energy. Next they ask him to find what, tell me, can simplify this thing. Now they ask him to find what, tell me, the number of charged particles. The number of charged particles case will find the q we can find. Q is equal to integration of I into dt. So how much the q value, tell me? Integral of I value how much now? 3 into how much time? 60 into 60 seconds. Number of charged particles, as we know charge is quantized, q is equal to ne. So that means number of charged particles, we can say q by charge of electron, that is, so 3 into this is 3600 by charge of electron 1.6 into 10 power minus 19. And we can do simplify, you can get the number of charged particle. कैलकुलेशन आप करना पड़ेगा. This session share to all your friends, and we'll have great sessions. So जो चाहिए वो हम डिस्कस करेगा. सारा प्रॉब्लम्स पर हमने फोकस करा. इट इज़ लाइक ए रिविजन कोर्स फॉर यू फेलोज. ओके, तो अगर कोई डाउट हुआ तो वो डाउट्स भी हम डिस्कस करेगा. सारा ज़्यादा सब्जेक्ट हम लेने के लिए कोशिश कर रहा आपके लिए. ठीक है. शो टू द ऑल योर फ्रेंड्स. नाउ टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यस. The current entering at the terminals of an element is shown in figure. Assume the current due to a positive charges. Yes, find the number of charged particles. Yes. A problem में है ना. So here boss कौन. So problem है ना. Problem नहीं है. मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही होगा ना. जब भी मैं हम डिस्कस कर रहा. Yes. हम हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा. जो चाहिए तो वो बोलो. Subject would you take? I'll take networks and digital. I will take in this course batch. नेटवर्क्स और डिजिटल दोनों हम लेने वाला इस कोर्स में, ब्रह्मास्त्र में. ठीक है. चलो. नाउ दे आस्क टू फाइंड, टेल मी नाउ हियर, assuming the current due to positive charges, they ask to find what, tell me, number of charged particles entering at the terminals 1 microsecond series. बोलिए we need to find the charge. चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा? Integration of current will give the charge, you tell me. Integration of I dt will give the charge. So yeah, बोलिए now here. So this means q, which is given as, integration is nothing but what are we finding? The area. Finding the area we can do. This means what I can say, the area under what, way to way now here 1 microsecond to 2 microseconds. ये area चाहिए ना. We need this part of area. So tell me, this is a rectangle na. Rectangle, area of this rectangle, how much now? L into b. How much it is? 1 microsecond 10 power minus 6 into what, tell me now here? This is how much it is? 5. Yes, so this is 5 into 10 power minus 3. So now we'll find this q. So how much the charge, you tell me now here? 5 into 10 power minus 9 coulombs. अभी हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ चार्जड पार्टिकल चाहिए.
सो अभी ने हमने देखा n इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से नाउ हियर q बाई e. n is equal to what? Tell me. Q by e. So 5 into 10 power minus 9, e value electron charge 1.6 into 10 power minus 19. सिंप्लीफाई करके बोलिए आंसर क्या होगा? These many particles are there. How many sessions in the networks? Approximately 40 to 50 sessions I will take. I will take around 40 to 50 sessions I will take. That depends upon requirement high, so we can continue also maximum. And I will focus about the major topics I will focus it. Problems में ज़्यादा से ज़्यादा हम focus करेंगे इसमें. A resistor of value R is stretched such that its length increases by n times. Then the new value of resistance is. Now we need the new value of this resistance. Yeah, बोलिए now here. कौन सा ऑप्शन? This is my conductor. ऐसा हुआ कंडक्टर. This is the conductor. अभी ये स्ट्रेच किया. अगर मैंने स्ट्रेच किया तो क्या होगा? यू टेल मी. इसका सो इट विल एक्सपैंड. इसके साथ और कोई चेंज होगा क्या? सो थिकनेस भी इंक्रीज होगा. इजंट इट? टेल मी हियर. थिकनेस डिक्रीज होगा ना इधर. नाउ इसका लेंथ, हाउ मच दिस लेंथ दे आर सेइंग हियर? इसका लेंथ इज L. इसका एरिया कुछ हाई. सो टेल मी नाउ हियर. नाउ दिस लेंथ विल बिकम्स व्हाट? टेल मी नाउ हियर. Where R is equal to what we can write now here? Rho L by A. अगर अगर स्ट्रेच किया तो लेंथ इंक्रीज होगा, बट लेकिन एरिया भी कम होगा ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा. हाँ कि नहीं? इस स्ट्रेच का वजह से ये कंडक्टर लेंथ इंक्रीज होगा, बट लेकिन इतना पतला होगा ना. अभी मोटा आई, ये पतला होगा ना अगर मैंने एक्सपैंड किया तो. सो दैट मीन्स इसके क्या होगा? टेल मी नाउ इधर. सो दैट मीन्स अभी क्या हो रहा इधर? लेंथ. सो हियर ये नया लेंथ. सो दिस इज L2. सो कुछ विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L, बट एरिया भी चेंज होगा. के लिए हमने एरिया कांस्टेंट नहीं होगा. सो इसीलिए हमने क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई विथ L से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. अभी क्या होगा? दैट इज रो इंटू L स्क्वायर बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ विल गिव्स व्हाट? टेल मी. वॉल्यूम होगा ना. इट विल बिकम्स वॉल्यूम, बट लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना. वॉल्यूम कांस्टेंट है. इसीलिए हम क्या बोलेगा हियर? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा. टू L स्क्वायर. सो टेल मी नाउ इधर अभी क्या करना? दैट इज R1 by R2 which is equal to what I can say? L1 by L2 का स्क्वायर. R1 is R and by this is R2. L1 by L2. पहले लेंथ is L, next one is N into L. That is R by R2, which I will get it as 1 by N. क्या होगा? Tell me. That is N square into R. I am A. So कौन सा ऑप्शन ऑफ C? यस. हम हमेशा हैंडसम लगता है यार. हम एसी है ना. हम हमेशा हमेशा हैंडसम है यार. तो आज नहीं, हम हमेशा हैंडसम लगेगा. हैंडसम ही है ना. तो हैंडसम ही है ना, इसीलिए हम हमेशा हैंडसम लगेगा. विकास.
राइट, टेल मी नाउ हियर, ये क्या बोलेगा इधर इसको? What we'll call this is now here, this is a dependent source. कौन सा type dependent source now here? This is the current source ना. So this is the current source. This is the current source. The value of this current source was controlled by what? Tell me now here. Current to this element. So this is called as what we can say here, current controlled. Current controlled current source. कौन सा ऑप्शन? सी. That is current source, this value controlled by current to this element, इसीलिए this is called as current controlled current source. Next, equivalent resistance calculation. हमने equivalent resistance calculation के लिए इतना सारा मेथड हम डिस्कस करने वाला, इतना सारा मेथड्स है equivalent resistance के लिए. देखो इधर बेसिक मेथड है, लैडर प्रॉब्लम्स, और क्या है बोलो? parallel symmetry, perpendicular symmetry, balanced bridge, unbalanced bridge and VT80 मेथड. इसमें सारा हिस्से हमको, ये मेथड हमको बहुत पसंद आई, इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से. चलो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन हियर. बेसिक मेथड के बारे में हम डिस्कस करेगा. ये बेसिक मेथड बोले तो क्या है? सो इफ द नेटवर्क, इफ द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड सीरीज or parallel, so based upon that we can decide now here, we can simplify the networks. ठीक है, चलो हम प्रॉब्लम शुरू करेगा. R equivalent is given as a 50. Now they asking to find the value of R. बोलिए ना, find out the equivalent resistance of this combination. You can see now how these three resistors here, tell me first of all, parallel में आई. So then can you tell me the equivalent here? 4. How much this value? Tell me. Yeah, 12/3, 4. इसका वैल्यू कितना आई? 4 आई. राइट, 4 प्लस आर एंड देन 10. सो ये मिलने के बाद इससे ये कितना होगा? टेल मी हियर. दिस इज 14 प्लस आर होगा. एंड दिस 14 प्लस आर एंड 60, it is in what? Tell me now here, parallel में आई. So I can say now this is R equivalent क्या है? Tell me the 30 is the series, and what else? What we can say? Tell me. 60 parallel to 14 plus R. बोलिए this thing. La la la. R equivalent, which is given as, tell me now here, 30 plus, which I can say 60 into 14 plus R by 74 plus R. Got it. अभी R equivalent ने दिया ना प्रॉब्लम में, कितना दिया? So this is 50 दिया, which is equal to 30 plus 60 into 14 plus R by 74 plus R. ये जीरो को मारा, so means 5 minus 3 2 होगा. 2 is equal to, so this is 6 into what I can say, 14 plus R 74 plus R. yes, 2 3 को मारा, 3 से मल्ट. सो हियर अभी क्या होगा? टेल मी. 74 प्लस R which is equal to, आपने सॉल्व किया तो हियर मैं जल्दी बोलूँगा यार, मैं जल्दी सॉल्व करा. अगर आपको आंसर बताया तो हियर हम जल्दी करेगा. मैंने सोचा कि सो आपके लिए हमने आराम से डिस्कस करा. सो 32 प्लस व्हाट वी कैन से 3R. या बोलिए आर का वैल्यू बोल, कितना आएगा? आर का वैल्यू कितना आएगा? टेल मी. ने आंसर जल्दी बोला तो हियर
मैं दूसरा प्रॉब्लम पर जाऊंगा। फटाफट टाक से बोल, आर वैल्यू कितना आएगा? 74 माइनस 52, सो इट इज 2 ना 52। नेक्स्ट वन विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो आर वैल्यू कितना? 7। ठीक है, चलो बस नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ये प्रॉब्लम भी देखो क्या आया, क्या है देखो इधर इधर। जल्दी बोलो, इक्वलेंट रेजिस्टेंस या। नाउ टेल मी नाउ हियर दीज टू इट इज व्हाट, टेल मी नाउ 8 होगा these two, and these two this is what you tell me now 8, and this 8 and this 8 parallel में होगा, so this value will become 4 होगा। 4 plus 4, 4 and 4 parallel, so 2 आएगा इधर, यहाँ से 2 आया। now you tell me now 10 10 क्या होगा? 5, this 5 and this 5, so मिला के क्या होगा? 2.5 मिलेगा। अभी बोलो ना हियर, आर ए बी क्या आएगा? आर ए बी विच इज इक्वल टू व्हाट, यू टेल मी। 2 प्लस 2 प्लस 2.5 कितना बोलो इधर? 6.5। आया 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 कि नहीं? बोल जल्दी फटाक से। 6.5 या नॉट 6.2 ना, 6.5 ना। ठीक, जल या बोलिए ना, इधर इधर भी बोल क्या है। now so ये दोनों पैरेलल में है ना, so tell me now equivalent is what, tell me now here। 20 into 30 by 50, ये जीरो मर गया, so here 5 6 ना हियर, ये कितना आया? 12 12 12 प्लस 8 20 होगा ये, so that means आर ए बी कितना होगा? दिस इज 20 पैरेलल टू 5, so tell me क्या होगा? tell me 4। डन 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 डन। अब जितना कैलकुलेशन फास्ट करेगा उतना हम ज़्यादा प्रॉब्लम हम डिस्कस करेगा, केवल आप पर डिपेंड होगा। जल्दी बोलिए ना इधर, इसका ए वैल्यू पैरेलल ना ही है, सो व्हाट आई कैन से ना 400/50 होगा, सो जीरो मर गया। देन व्हिच इज नथिंग बट 5 8 ना हियर, ये वाला 8 आई, ये वाला क्या है बोल? दिस वैल्यू 4 है ना, so 4 and 4 12, here this is आर ए बी 8 plus 4 12 आया, 12 आया, 12 आया। बस यहाँ बोल, यहाँ बोल। सी दिस थिंग हियर अभी 20 एंड दोनों दो दो ले लो, अच्छे से फास्टली हो जाएगा। 20 30 अभी ने हमने किया ना, सो हियर 20 एंड 30 हमने किया, 20 30/50 किया हमने, सो जीरो का मर गया। दिस इज 5 फोर्थ ना हियर 12 आएगा, दिस इज 12 12 and 60 पैरेलल, 12 into 60 by what, tell me now 72 आया, so tell me now here 12 6 ना here, so this is 10 आया, so this is 10 10 20 20, so this is 20 into 80/100, क्या आया क्या आया क्या आया? 16 आया, so this is आर ए बी कितना बोल, कितना के तक गया आपने? 16 यार, इसमें ये प्रॉब्लम।
या ना? हाँ, आंसर। यस, ट्राई करो दिस थिंग ओबी। अगर आपको कभी भी ये सब क्रॉस कनेक्शंस ऐसा दिखा तो बेटर ट्राई टू रीड्रॉ द सर्क्यूट। ट्राई टू रीड्रॉ द सर्क्यूट, सो ये अच्छा अच्छा होगा। सो देन ये सारा दिस इज बी ओनली, दिस इज कंप्लीटली बी ओनली, दिस इज बी, दिस इज बी, एंड दिस पॉइंट इज ए, एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट यहाँ तक, दिस पॉइंट इज ए ओनली, ए ओनली, दिस पॉइंट इज बी ओनली। सो दिस पॉइंट लेट अस से सम सी मान लिया। नाउ रीड्रॉ करो सर्किट को। ए पॉइंट हमने ए मान लिया, ए पॉइंट हमको बी मान लिया, इसका बीच में कुछ सी है। सो ए रेसिस्टर ए टू सी में है ना, सो ड्रॉ। सो दिस इज नाउ 5। ए वाला ए टू सी में आई, ए बी, यस सर, ए टू सी और बी टू सी दोनों सेम आई, दिस इज 20, एंड दिस इज बिटवीन सी टू बी आई, ड्रॉ करो। दिस इज ए टू बी आई, ए कितना है 2, एंड दिस इज ए टू बी में है, एंड दिस इज व्हाट नॉट 3। अभी इजी होगा कि नहीं बोल? अगर whenever you find this type of connections, what we can do here, better redraw the circuit को redraw करो, then तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेल मी नाउ हियर, ये दोनों मिलके क्या आएगा इधर? 4 आएगा, and 2 6 now here is 4 and 2 6, 6 and 3 parallel, so what tell me now, 6 into 3 by 9, क्या है 2 ना, 9 कहाँ से मिला आपको? और भी करिए, जितना करो उतना प्रैक्टिस होगा, जल्दी करिए। से पहले ये दोनों सीरीज में है, 55 करो, एंड ये बाकी ऑल दिस आर पैरेलल में है ना, सो दो दो सिंप्लीफाई करो, दो दो लेके सिंप्लीफाई। व्हाट वी कैन से हियर, 400 by 50, फर्स्ट थिंग, 0 0, एंड दिस इज 8, एंड ये दोनों 20 into 30 by 50, ये क्या आया 5, ये वाला 12 आया, ये दोनों पैरेलल नहीं है। See this thing here, mostly here, so this month and next month से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सो हियर दिस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने में सारा सब्जेक्ट खत्म होगा, ये 3 महीने में। सो इन दिस 3 months विल फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स। 2's now 4 5's, so this value how much now, 24 by 5, isn't it? So 24 by 5 means what we can say 4.8 होगा ना, so that means RAB कितना होगा, 59.8 है। देखो आप लोग, सेम ही आया कुछ और आया। So question fast, how speed fast?
asking how to improve the speed, isn't it? इम्प्रूव स्पीड इम्प्रूव करने के लिए केवल केवल प्रैक्टिस है। केवल आपने उससे प्रैक्टिस किया तो यह तुरंत आपको दिमाग में क्या लाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम देखने के बाद ऐसा ऐसा करना पड़ेगा ऐसा। सो ये प्रॉब्लम देखने के बाद ये कौन सा तरीका करना, ये इतना ऐसा नहीं होगा। लेक्चर कितना बजे स्टार्ट होगा ये डेली? मेरा क्लास का टाइमिंग्स ना हियर। ओके, मेरा क्लास का टाइमिंग्स के बारे में, सो बेटर व्हाट वी कैन डू हियर, यू कैन डू फॉलो सो दिस थिंग मेरा दिस थिंग सो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो, तभी आपको पता चलेगा। जब भी एक कम्युनिटी में, सो जब भी मेरा क्लास होगा उसमें हम भेजूंगा, आई विल शेयर माई लिंक्स दे। सो हियर जब भी मेरा स्पेशल क्लास होगा, प्लस क्लास होगा, आपको तुरंत मैसेज आएगा क्लास के पहले, क्लास का टाइम के पहले। यू कैन एबल टू आराम से फॉलो करो ऐसा। डन। चलो ये भी करो, ये फटाफट करो। सो दिस इज RAB, RAD, need to find RAD, A to D we need to find। हम्म, A to D we need to find। देखो इधर A to D कैसे फाइंड आउट करेगा बोलिए। So simply what we can do here, we need to find A to D only। So ये वाला C वाला and B वाला simply remove करो पहले, first thing। yes, A से current शुरू होगा and this is the ending point। ठीक है। now you can see now इधर इधर कुछ current इधर जाएगा, this current is I1 and let us say this current is I2, कुछ current इधर जाएगा। now you can see now इधर जो करंट यहाँ आया, दिस करंट यहाँ यहाँ इधर जाने के बाद इधर जाएगा एंड इसके बाद इधर आएगा, वापस इधर आना पड़ेगा। मीन्स दिस करंट, सो दिस रेसिस्टर में करंट इज I1, इधर भी I1, इधर भी I1 आई, सेम करंट इज पासिंग। तो ये क्या बोलेगा, कौन सा कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में होगा ना, दोज आर इन सीरीज में। सो मीन्स व्हाट आई कैन से इधर 1 plus 3 plus 4 and current dividing means it is a parallel। बस इतनी है। so this is what we can say 8 parallel to 2, 8 and 2 are parallel में हुआ, means what we can say here 1.6 होगा ना। now अभी आप ही बोलिए RAB के बारे में बोल। so क्या से कहाँ से ना, ये टू बी चाहिए, ये टू बी चाहिए, बाकी को रिमूव करो, सी को रिमूव करो, डी को भी रिमूव करो। इधर करंट कहाँ से शुरू होगा, ए से एंड फाइनली बी तक आएगा। अभी पाथ देखो अच्छा से। यस, इधर करंट कुछ आएगा, ये करंट यहाँ जाके इधर आएगा I1, ये करंट यहाँ जाके इधर आएगा। we can say tell me now here either 1 and 3 are in series में है and what we can say here 2 and 4 are parallel series में है, अभी दोनों parallel में आए। so what I can say now here 4 parallel to 6, 4 parallel to 6, so means what tell me 2.4 होगा ना, ला ला ला।
समझ में आ रहा ना मैं कैसा डिस्कस करा, ये तुरंत फास्टली ऐसा हो जाएगा ना। डन। नाउ अभी बोलिए आर ए सी के बारे में बोल। ए टू सी होना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट बी नहीं चाहिए, डी भी नहीं चाहिए, ए टू सी चाहिए। सो इधर इधर वापस करंट आना पड़ेगा आई। टेल मी नाउ हियर, सो दिस करंट कंप्लीट करंट इज I1, ये करंट यहाँ आएगा, ये दिस करंट इज I2, यहाँ यहाँ आएगा, फाइनली ये करंट I2 इधर आएगा, दिस करंट इज I1। बोलिए ना इधर। सो दिस इज plus 4 plus 3 parallel to what I can say, this is 1. This means how much you tell me now here? 6 plus 3 9. So this is 9 by 10, which is equal to 0.9. Next tell me now R B C बोलिए, B to C, B to C, B से शुरू होना पड़ेगा, फनल पॉइंट इज C, B से स्टार्ट होगा। इधर करंट इज स्टार्टिंग, दिस करंट इज I, वो करंट कुछ करंट इधर जाएगा, दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2। नाउ यू कैन सी दिस थिंग हियर, दिस करंट, एक करंट यहाँ जाके, सो इधर बी सी रिक्वायर्ड, ए डीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इसको रिमूव करो, ए डीज आर नॉट रिक्वायर्ड, रिमूव करो। ये करंट यहाँ जाके इधर जाके यहाँ से इधर आएगा, फाइनली सी पर आएगा, इधर आएगा, दिस करंट इज आई। ठीक है, बी टू सी। नाउ यू टेल मी नाउ हियर, पाथ 4 plus 2 plus 1 parallel to what I can say 3 होगा। Both this is 7 3 parallel, so means what will get now 7 21 2.1। check करो all of you, check करिए all of you। आया 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 Allah, everybody got it? ला 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 ला। समझ में आ रहा ना जो हमने डिस्कस किया, लाइक ये सब प्रॉब्लम्स हमको अच्छा से समझ में आया ना। यू कैन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, फटाक से हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क वी यूज्ड टू कॉल दिस एज अ लैटिस नेटवर्क। ये क्या बोलेगा? लैटिस नेटवर्क बोलेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए लैटिस नेटवर्क। जब भी लैटिस नेटवर्क आए तो तुरंत हम सॉल्व करेगा ऐसा फटाक से। ठीक है, फाइन, ओके, या fine, okay, that's for the today's session, and we'll meet in the next class. Tomorrow we'll meet, okay then. So see you, bye bye. All of you do like the session. Time of the class, so time of the class will tomorrow also we have a same timings we can plan at 7:30। या सो कुछ प्रैक्टिस करो श्रेयस, अगर कुछ प्रैक्टिस किया तो इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में अल्टरनेटिव ऐसा नहीं है, सो हियर थोड़ा प्रैक्टिस इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस। और सो हियर स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस इंक्रीज करो। सो हियर एंड प्रॉब्लम्स पेपर में लेके सो कुछ कुछ एक एक स्टेप एनालाइज करना पड़ेगा ना। कुछ एक दो बार हम अच्छा से किया तो so then you can easily able to identify the method। okay, थोड़ा इंप्रूव करो, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस से आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
ठीक है, चलो, यस, हम कल मिलेगा. सो हियर all of you do like the sessions, do like the session and share to all your friends. See you, bye bye, good night. हम कल मिलेगा अच्छे से. And we'll continue tomorrow.